First point, I have prepared this checklist. This sample points to be classification the branch and our report as a modified. Our test check revealed that there are several borrower accounts in the advances statement carrying the following errors. अगर हमने एनपीए जो अभी हमने बात करी एडवांसेस की बोरोवर अकाउंट्स की, अगर उसमें कोई ऐसा फ्लो मिलता है जिसके बेसिस पर बहुत सारे अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं, then we can definitely cover those points in our modifications, and we have to show and we have to qualify our audit reports. Instead of we should write several borrower accounts have been classified as standard assets instead of non-performing assets, and unrealized interest for the current as well as the prior period have been accounted for, resulting overstatement of the profit and advance at the branch level, and would result the under provisioning of advances as per the RBI prudential norms of RBI income recognition asset classification. What it is saying कि अगर कोई एडवांस एनपीए क्लासिफाई हो गया, उस पर जो इनकम अर्न करी है ब्रांच ने फॉर द पास्ट पीरियड, वी हैव टू रिवर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेट क्लासिफिकेशन इनकम रिकॉग्निशन. हमने एसेट को क्लासिफाई किया, देयर आफ्टर इनकम को रिकॉग्नाइज हम उसी बेसिस पर करेंगे. अगर स्टैंडर्ड एसेट है देन इनकम विल बी क्लासिफाइड. अगर सब स्टैंडर्ड एसेट्स है मींस एनपीए है, देन इट इनकम विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन दोज एसेट्स. और अर्लियर पीरियड की अनरियलाइज्ड इनकम जो भी इंटरेस्ट है वो हमें वहां पर रिवर्स करना होगा, और उतने अमाउंट से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो ओवर स्टेटेड हो रखा है उसको हम रिड्यूस करेंगे. सो इसका एक एमओसी भी पास होगा, मेमोरेंडम ऑफ चेंज जिसको हम बोलते हैं, और इसकी क्वालिफिकेशन भी मेन ऑडिट रिपोर्ट में आएगी. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एडवांस, the security has been presumed without the physical verification, valuation of such tangible security, which would have been deteriorated or eroded due to the passage of time, which might affect the provisions or for advance materially. हमें ये भी देखना है कि जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड की गई हैं एडवांसेस में, उनकी वैल्यूएशन टाइम के साथ डेटेरियोरेट या इरोड तो नहीं हुई है, और अगर इरोड हुई है 50% तक देन उसका अलग प्रोसीजर है, हमारा जो प्रोविजन है वो डबल हो जाएगा. और अगर रिड्यूस होके वैल्यूएशन 10% तक आ गई है तो प्रोविजनिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी. फिर आफ्टर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस की. पॉइंट नंबर 2, बैंक में जहां पर रूरल ब्रांचेज होती हैं, देयर आर सो मेनी बोरोवर अकाउंट्स अंडर कैटेगरी ऑफ केसीज, किसान क्रेडिट कार्ड, जहां पर हम जनरली एक पॉइंट देखेंगे कि केसीसी अकाउंट जो लोन मिलता है वो स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स और इन्हीं एक्टिविटी के लिए मिलता है, जहां पर उनको स्पेशल इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, इंटरेस्ट रेट में भी छूट मिलती है, और उन्हें बेनिफिट भी होता है कि वो 1 साल के अंदर वापस कर दें तो द्वारा उन्हें सेंक्शन हो जाता है. तो इस कुछ केसों में आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे जहां पर सिमिलर अकाउंट्स और मोर और इक्वल डिपॉजिट किया गया लास्ट डेट पर और उसी दिन विड्रॉ कर लिया गया. बैंक कहीं ना कहीं इस चीज को चाहता है कि उनके अकाउंट्स एनपीए ना हो. तो मैनेजर अगर इस तरह की कोई सेटिंग किसी ने करी है तो हमें उस पर भी अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट में दोज इशू हैज टू बी कवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं हाउसिंग लोन की, जहां पर several irregular housing loans have been rephased or by modifications in term and condition in the CBS without any request from the borrower, documentation approval from the appropriate authority, which is in our opinion is beyond delegated authority. जहां पर clients है हाउसिंग लोन जिसको दिया गया, उससे अगर कोई रिफ्रेज करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल नहीं आई है, स्टिल branch is doing so, then we have to report those the delegated authority, delegation power of the management, and if it is a possible window dressing and ever beginning of the loan performing advancing, then we have to cover those areas.
We have to observe 50 such accounts aggregate outstanding more than 10 crores as per Annexure 1. ये नंबर्स छोड़ देते हैं. फोर्थ पॉइंट जो मैंने फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन का डाला है, जहां पर हमने कोई एडवांसेस की सिक्योरिटी चेक करी और बेस्ड ऑन द सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल अप टू 3 years, the tangible security has been presumed without physical verification valuation, then we have to report those facts also. And fifth point is regarding housing loan granted, more particularly the significant proportion of such facility disbursed at the initial stage of the project. जहां पर प्रोजेक्ट हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई एक हाउसिंग लोन लिया और जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हमारा फ्लैट 5th फ्लोर पर है, 5th फ्लोर ही नहीं बना होगा तो हमारा फ्लैट कहाँ पर होगा. तो इस तरह की अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग पर कोई लोन अगर सैंक्शन किया गया है, देन वी हैव टू रिपोर्ट दोज मैटर्स. In our opinion, the presumption of the existence of such future properties is erroneous and devoid the fact, and such loans cannot be treated as secured by tangible securities unless there is evidence of the existence of such security. We have to classify these advances as a unsecured. So these are the few points which we have to keep in mind while drafting our independent audit report. Optotex, India's #1 GST platform, all because of your love and support, and it is exclusively free for tax professionals. So please, I would request everybody to use Optotex in their offices to reconcile ITC, to download all the beautiful reports we have, and it is trusted by 50,000 plus tax professionals now, who are serving their 1 million plus clients, right? So please make sure that all of you use Optotex in your offices. It will help you a lot. And what are the benefits? How does Optotex help tax professional making GST compliance simple? Sir, automatic reconciliation of ITC, auto fetching of data from 1st July 2017. So if you start using Optotex from today, then also you will be getting the data from 1st July 2017. This is the beauty of Optotex. Third, if you are using any other software, no problem, sir. You can simultaneously also use Optotex. In just 2 minutes, Optotex fetches all data from the government portal. We have got all the due respective approvals from the government, and all the data is fetched in your system for all your clients. You have 500 clients, 200 clients, single dashboard you will be able to see, right? This is the beauty. I think many of my tax professionals, the tax professionals present in the webinar using Optotex, everybody is saying it is very nice. Thank you so much for your love and support, sir. The full facility, opt-in, opt-out facility, IFF, everything is there in Optotex now. What are the differentiators? Live dashboard, multiple users, no installation required, automatic purchase reconciliation with 2A. What's more, you can view cash and credit ledger, download month-wise 2B, GST Challan creation download. Yes, the best part, I'm making an announcement here. We are making the Challan payment also automatic now. It will be integrated to your net banking, whatever net banking you are using, and Challan payment also you can do now from Optotex. Very soon we are bringing this feature. It took a lot of time for us to take all the approvals from the banks, but yes, we are bringing that features. Skipping this all the basic slides because already many people are using, but still if you're not using, please do sign up. And support, we focus a lot on support. This is the phone number. If you want to note down, just call this number and he will guide you how to use Optotex. And sign up you can do yourself. It's just a 1-minute task, but please note down this number. You can call on this number. info@optotex.com is our email ID. YouTube pe we have demo videos. You can see the demo videos and then you can use Optotex. But I would suggest everybody to please start using Optotex. This is the software link, https://gst.optotex.com. Google Chrome browser. It works in desktop or laptop, right? So amazing facility we have given to you. So even from the technical aspect, we are trying to help you. So please utilize this benefit. Ashish ji, sir, rest all the software companies will run from the market as your Optotex. Ashish ji, our motive is not to make anybody run. Our motive is to serve the tax professional community, to help the tax professional community, make a GST platform, bring all of them together, scratch their brains, learn whatever the provisions are coming up, and work also. Let's make simple. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss important GST updates.